Hello everyone and very good morning. I hope you all are doing well. So yeah, after a long time we are meeting here, right? I hope you all attempted or gave your board exam. I mean, it went quite well. And today in this session, we are here to discuss some questions. I mean, we are basically to revise chapters through questions, basically, mostly. And this is regarding your NEET examination, right? सो व्हाट वी विल बी डूइंग आज के क्लास में पहले तो मैं ये बता दूं स्टूडेंट्स विल बी बेसिकली फ्रॉम बोथ पुणे रीजन एंड हैदराबाद रीजन सो कीपिंग दैट इन माइंड आई विल बी यूजिंग मोर इंग्लिश आई एम रियली सॉरी फॉर दैट सो आई मीन आई विल बी मिक्सिंग हिंदी बट मोस्टली आई विल गो विथ अ वेरी इजी English, I'd say, so that you all can understand the lecture clearly. Okay. So in today's class, what we are going to revise, we will be revising kinematics. Done it? And you already know the pattern of examination and everything. I mean, there will be 45 questions. And what is the, I mean, how to score more in NEET exam? There are more number of questions, but the benefit of that is questions won't be that difficult. If you know the concept, if you know the formula, you will be able to solve so many number of questions. What is the demerit? Demerit is that since you have more number of questions, you have to quickly solve the questions, right? So what you have to do is you have to practice more. Uh, yeah, sir. Thank you. So what you have to do is you have to practice more solving thing. Done it? So every day after the class is finished, I mean today I'm finishing kinematics. So after that, what should be your task is just take all questions. I mean as many questions as you can from your textbook or something, or basically refer to previous year. So solve as many PYQs as you can. That will enhance your speed and also your accuracy. एंड टू बेटर चेक विथ योर स्पीड इट्स वेरी मच मैंडेटरी कि आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. उसी से पता चलेगा कि स्पीड, इवन इफ स्पीड इज हाई, हाउ मच एक्यूरेट यू आर. ऐसा नहीं है कि काफी कम समय में वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग एक्यूरेट आंसर्स देन देयर इज नो बेनिफिट ऑफ बीइंग that speedy, right? So you have to bring in both things together. First is your speed and second thing is your what? Accuracy. So both thing we have to take together. ठीक है. सो आज की क्लास में हम काइनेमेटिक्स को देखते हैं एंड क्वेश्चंस इजी होते हैं, क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट. डन है. सो बेसिकली सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स को मैं रिवाइज करवाऊंगी एंड फॉर्मूलाज को. डन है. सो काइनेमेटिक्स में हम लोग आज की क्लास में 1D 2D मोशंस दोनों को देखेंगे. सो 1D मोशंस की अगर आप बात करो ना, आई एम नॉट गोइंग इनटू बेसिक की एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स, राइट? सो सबसे पहली चीज है इक्वेशन ऑफ मोशन. आप सबको याद होगा इक्वेशन ऑफ मोशन हमने तीन पढ़ा था. एक पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस एटी, और ये इक्वेशन हमने किसके लिए पढ़ा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इन अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, एंड इफ द बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट मींस इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम. लेट्स से इट्स एक्सेलरेशन इज ए, इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाज यू. इनिशियल वेलोसिटी का हमेशा मतलब होता है वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी एट द टाइम व्हेन इट स्टार्टेड द मोशन. सो u, v is velocity at any time t, a is the acceleration, t is random time, right? So this is the first equation. Second equation क्या था? is equal to ut plus हाफ एटी स्क्वायर. जब मैंने तुम लोगों को क्लास में पढ़ाया था देन ओनली तब भी मैंने बोला था कि इस इक्वेशन को बहुत केयरफुली देखना होता है. कभी कभी क्वेश्चंस थोड़ा घुमा के देगा, जैसे यहाँ पे सिंपल दिख रहा है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है एस इज डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, ए इज एक्सेलरेशन, यू इज इनिशियल वेलोसिटी. ये तब हम लिखते हैं ना जब हमारी बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, यानी कि उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. ठीक है, जीरो it is. But if it is starting from somewhere here, let's say it is starting from x naught. अगर ये x naught से start करेगी, then how you will write the equation? So then you will write s plus x naught you will do. ठीक है, and this is equal to ut plus half at square. क्योंकि here if you are going to put t equal to 0,
अगर आप t इक्वल टू 0, सॉरी s प्लस नहीं होगा, s माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस। तो ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग, आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तो ऐसे पूछ सकता है, s माइनस एक्स नॉट। सो अगर आप यहाँ पे t का वैल्यू 0 बैठाओगे ना, तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स नॉट। यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज एक्स नॉट, दिस इज दिस थिंग, राइट, ऐसे लिखना है हमें। और थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, अगेन s की जगह में क्या लिखूंगी, s माइनस एक्स नॉट। Generally, x naught is zero, and that is why only we see s here. But yeah, it can be non-zero. So you have to keep this in mind. Second thing जहां से क्वेश्चन बनता है वो है तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। इसका क्या मतलब है, अगेन दिस थिंग वी रीड और वट एवर फॉर्मूला वी हैव इज फॉर व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट line and its acceleration is constant, and in that case the formula that we get is s equal to u plus half, ठीक है, ए ए बाई टू, टू एन माइनस वन। दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। डन। अगर तुमसे कुछ कोई पूछता है कि 10th सेकेंड में कितना चला, तो n का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। 10th सेकेंड कहने का मतलब t इक्वल टू 10 से स्टार्ट होके 11 तक। डन है। सो दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसमें अगर वेरिएशन आ सकता है तो वेरिएशन कुछ ऐसा हो सकता है जैसे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो एक्सेलरेशन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हमसे ये पूछ रहा है, सपोज देर इज इंक्लाइंड प्लेन एंड ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन देर इज अ बॉडी एंड इट इज स्लाइडिंग डाउन और इट इज कमिंग डाउन, डन है। इन दैट केस इफ दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, अगर यहाँ पे म्यू जीरो है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आप क्या लिखोगे, जी साइन थीटा। तो दिस फॉर्मूला यू कैन यूज, कौन सा फॉर्मूला, distance covered in nth second, that is u plus a by 2 2n minus 1। ये फॉर्मूला हम कब तक यूज कर सकते हैं, जब तक a कांस्टेंट हो। यहाँ भी a कांस्टेंट है, दैट इज g sin थीटा। सो दिस थिंग यू कैन यूज हियर आल्सो। इवन इफ देयर इज फ्रिक्शन म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इन दैट केस आप क्या करोगे, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, जैसे अगर फ्रिक्शन है तो नीचे की तरफ फोर्स लगा mg sin थीटा, एंड यू ऑलरेडी यू आर अवेयर ऑफ कि कैसे हम ब्रेक करते हैं। सो मैं रैंडमली लिख रही हूँ, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, दैट इज म्यू एम जी कॉस थीटा। सो नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड सेंस इफ इट इज कमिंग डाउन देन इट विल बी हाउ मच, एम जी को आप कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सो यू कैन पुट हियर ए का वैल्यू। डन है। एक बार क्वेश्चन आया है, लॉन्ग बैक आया था, बट वहां पे u जीरो था और दो एस एन को कंपेयर करना था, तो a कैंसिल हो गया। सो देयर वाज नो यूज ऑफ कैलकुलेटिंग a, बट इवन इफ यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट इन द क्वेश्चन, यू कैन कैलकुलेट इट दिस वे। सो दिस इज सेकेंड थिंग। एक है तुम्हारा गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये कहाँ से आता है, ये आता है तुम्हारा 1D मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इससे क्वेश्चंस भी आया है। सो अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो इसमें सिंपल ये है, sorry, anyone has any doubt so far? If yes, let me know. You can text me in the chat section, ठीक है। डन है। ओके। सो by the way, if you require the recording to watch, this is already on YouTube actually. So you can go to Avanti Live 4, I guess. Yes. And there you will get the playlist NEET Crash Course 2024-25। You can search the playlist and you can watch it. Okay, done. Which thing? Once again, can you let me know? Which reason is this? I cannot understand your question. Can you all, make your name, I mean, from random names I'm getting the messages. Can you properly write your name here? Just say account name is MMM. It will be more easier for me to call you in the classroom if you name yourself properly.
Which region means, if you're talking about Pune region and Hyderabad region, then I would say this is combined. Okay. So this is for all the regions. And once again, you're talking about which thing? डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड अगर आप पूछ रहे हो ना, तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का सिंपल फॉर्मूला ये है, u प्लस ए बाई टू, 2n-1। जनरली इन क्वेश्चन a इज गिवन, ठीक है, a हमेशा क्या होता है, गिवन होता है। बट if it is not given and some scenarios are given, such as if there is a ball kept on the inclined plane and it is coming down with certain acceleration, in that case you need to calculate acceleration. So if it is frictionless, acceleration is g sine theta. Again, a is constant, so you can use the formula. And if there is friction, then a will be what? जैसे अगर अगर तुम्हें फोर्स ब्रेक करना तो आता होगा, आई एम अज्यूमिंग। सो यहाँ पे mg फोर्स डाउन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। mg का ही कंपोनेंट अलोंग द प्लेन है mg साइन थीटा, एंड अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर। सो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इनटू एन आई हैव कैलकुलेटेड, अकॉर्डिंगली आई हैव पुट इन हियर। ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग यू नो द बेसिक थिंग्स, है ना, पता है ना तुम लोगों को। अगर नहीं भी पता है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन लेट मी नाउ ऑल्सो। अब देखो मैं कैसे बुलाऊं, ओप्पो लिखा हुआ है, मोबाइल फोन के नाम से बुलाऊं तुम लोगों को? प्लीज रीराइट योर अकाउंट नेम प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। इन क्लास आई विल फील गुड ना, if आई हैव टू कॉल बाय योर नेम, है कि नहीं? एनी डाउट? नो? चलो नहीं है तो ठीक है। सो अगर फ्री फॉल में वन डी मोशन की बात करो, जैसे एक बॉल है, इफ इट इज ड्रॉपिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट टू द ग्राउंड, so basically it is moving under constant acceleration। कौन सा acceleration? Acceleration due to gravity। so इस केस में एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि आया भी है बहुत साल। सो दैट कॉमन क्वेश्चन इज कि लेट्स से यहाँ t इक्वल टू 0 पे तुमने बॉल को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। सो इन 1 सेकेंड इट विल ट्रेवल सम डिस्टेंस, it in another 1 second, I mean from 0 to 1 second it traveled some distance, from 1 second to 2 second it will cover some distance, from 2 to 3 second it will cover some distance, done। so Galileo law of odd numbers ये कहता है कि distance, ratio of distance covered in all these seconds, first second, second seconds, third second, will be the ratio of odd numbers। so it will be 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9 and so on। ठीक है। Okay, this class is of kinematics. You can see the heading here. It is kinematics, 1D motion and 2D motion. Any problem? Anything? Any help you need? ठीक है। सो इससे मैंने क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है, वी विल डू दैट क्वेश्चन। सो अगर तुमसे कहता है कि फर्स्ट सेकंड में वो एक्स डिस्टेंस चला, x1 चला सपोज, एंड सेकंड सेकंड में, कहने का मतलब कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में सपोज कर लो x2 चला, और 2 से 3 सेकंड के बीच में x3 चला, तो बताओ रेशियो क्या होगा? सो रेशियो विल बी इक्वल टू व्हाट, 1:3:5। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। अगेन ये आंसर कहाँ से आ रहा है? यू सिंपली नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन क्लासेस आल्सो, आई हैव डन इट। सो देयर वी डिड इट। अब देखो 2D मोशन से क्वेश्चंस काफी कम आए हैं। अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर में जाओगे, यू लुक एट क्वेश्चंस पेपर फ्रॉम 2024 23, you will see like from 1D motion there are more number of questions than 2D motion। ठीक है। सो और 2D मोशन से जो क्वेश्चंस भी होते हैं काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बोथ मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, दोनों ही है। सॉरी समबडी आस्क्ड टॉपिक क्या चल रहा है। सो 1D एंड 2D दोनों। 1D मोशन का मतलब मोशन इन अ लाइन, 2D मोशन का मतलब मोशन इन अ प्लेन, सो दोनों ही चल रहा है। ठीक है।
प्रोजेक्टाइल 2D मोशन में हमें क्या क्या पढ़ना है? प्रोजेक्टाइल मोशन, रिवर बोट प्रॉब्लम, और रिलेटिव मोशन में तुम्हें 2D से ज्यादा आता नहीं है, बहुत रेयर है, मुझे नहीं मिला एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैंने देखा, सो इट्स वेरी रेयर, it's not there. Done. From relative motion, 1D sort of question you will get only. Done. So let's look at first projectile motion. Projectile motion में भी questions will be very simple. So first thing that you have to study is ground to ground projectile. यहाँ से question सबसे ज्यादा था, वो भी formula based basically. Done. So ground to ground projectile. Here what will happen? You are throwing ball from ground at certain angle with the horizontal, and then it is again hitting the ground. So this is ground to ground projectile. इसके लिए हमें तीन चीजें पढ़ना था. Time period. Time period means it is starting from here at A and it is ending at B. So how much time it took from in going from A to B? कितना time लगा? So that time is time of light and that is 2u sin theta by g. अगर आप u sin theta को देखो तो this is u is what? Initial velocity of projection, or let's say it is velocity of projection. So u cos theta is initial velocity along the x direction. U sin theta is initial velocity along the y direction. So basically u sin theta क्या है तुम्हारा? 2u y by g. मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ? मैं ऐसे लिख के ये बता रही हूँ तुम्हें कि असर्शन रीजन में आ सकता है. Time of flight depends only on the y component of velocity, not on the x component of velocity. Then, so this is 2uy by g. Next is your maximum height. So maximum height reached is here. Then, so ये h का वैल्यू कितना होता है? This is your u square sin square theta divided by 2g. Again, u square sin square theta is what? This is uy square by 2g. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड डिपेंड्स ओनली ऑन द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. सेकेंड पॉइंट. ठीक है. और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या क्या होता है? सो एट द हाईएस्ट पॉइंट दिस बॉडी विल हैव ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. डन है. Here uy will vy will be 0, यानी कि velocity in the y direction will be 0. Highest point हम निकालते ही वैसे we make vy 0, right? So at highest point y component of velocity is 0. It has only x component of velocity. And next is your range. A range क्या होता है? Range है कि maximum distance कितने दूर तक गया वो in horizontal sense. So this is AB and इसका फॉर्मूला क्या होता है? If you remember, u square sin 2 theta by g. So sin 2 theta को अगर आप break करोगे, you will get 2 sin theta cos theta. So it is basically depending on both x component of initial velocity and y component of initial velocity. So range दोनों पे depend करेगा, but maximum height and time of flight depends only on the y component of velocity. इसमें एक चीज तुम्हें और याद रखना है, वो ये है कि जब ये बॉल यहाँ से चला, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u, and in the motion, throughout the motion, if there is no air friction, जिसको कि हम मानते हैं कि नहीं है, done it. So if we neglect that, then at point B, when the ball is hitting, its velocity is u itself. क्योंकि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, देर इज नो ड्रैग थिंग. डन है. सो इन दैट केस जितने वेलोसिटी से तुमने प्रोजेक्ट किया था, विथ सेम वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड एट बी. Again, the question is of at what angle. So the angle will be same also. Here, if angle of projection is theta, theta it is making with the horizontal, then here also it will make theta with the horizontal while it will strike the ground. So these are the things you have to remember in ground to ground projectile. तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अगर आता है तो हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन एक काफी आता है. वो ऐसा होता है कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल है एंड यू आर थ्रोइंग इट हॉरिजेंटली. ठीक है. सो लेट्स से वी आर थ्रोइंग इट हॉरिजेंटली विद स्पीड u. We are not giving it any velocity in the y direction initially. So what will happen? Since initially there is no velocity in the y direction, it won't go up. It will simply go forward. And while it will go forward, it will also come down because gravity will attract it downward. So its trajectory looks like this. है ना, हमने पढ़ा है ये चीजें, ऐसा दिखेगा. So इसके लिए अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, कैसे निकालोगे? लेट्स से दिस हाइट ऑफ टावर का हाइट इज h. रेंज तो सिंपल ये हो गया, दिस इज रेंज, है ना. if we know what is h, how we can calculate it?
और हाउ वी कैन कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। डन है। सो बेसिक चीज है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन था? एस माइनस एक्स नॉट मैंने लिखा था, एस नॉट ले लो, because x naught तब लिखेंगे when we are dealing with x direction. So let's write the general term s naught ut plus half at square. अब आप ध्यान से देखो, when the projectile is moving हमारे पास दो डायरेक्शन होता है, x होता है, y होता है, ठीक है। so when it will come when it will travel like this, it is moving both in x and y direction. So let's write this equation in y direction. सो इनिशियली एस नॉट का वैल्यू क्या होगा वाई डायरेक्शन में, एस नॉट वाई। सो इनिशियली बॉल यहाँ है, अगर मैं इसको ओरिजिन लेकर चलूं, इसको ओरिजिन लेकर चलूं, तो इनिशियली बॉल कहाँ है, एच हाइट पे है। सो एस नॉट वाई इज एच। और इफ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइनली बॉल यहाँ होगा। सो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस वाई जीरो, क्योंकि एस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, एंड टी को हमने टाइम ऑफ फ्लाइट माना, तो ये जीरो हो गया। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जीरो माइनस एच, एंड इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, सो दिस बिकेम जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल गया, ये कितना होता है, टू एच बाई जी होता है, आप इसको याद रखना। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है, एच गिवन है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया। और अगर आपको रेंज निकालना है ना, सो रेंज यू कैन इजिली कैलकुलेट नाउ। रेंज क्या होता है, रेंज हम कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन जो कि u है, ये हमेशा u रहेगा क्योंकि देर इज नो एक्सेलरेशन इन u डायरेक्शन, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। सो फ्रॉम हियर यू विल कैलकुलेट रेंज, you know time of flight, you can calculate range, height is already given, there is no other question. So प्रोजेक्टाइल से मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, उसके बियॉन्ड कुछ आएगा नहीं। अगर तुम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा याद रखना है फॉर द सेक ऑफ कि कहीं गलती से कुछ छूट ना जाए, तो एक है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, और उसको मैं कैसे लिखती हूँ, उसको जनरली मैं लिखती हूँ y इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। बट फॉर नाउ लेट लेट इट गो, लेट इट गो, क्योंकि इससे आया नहीं है क्वेश्चन, सो आई डोंट वांट टू कीप इट हियर, है ना। लेट्स मेक थिंग्स सिंपल, क्योंकि तुम लोग का एग्जाम पास है ना, लेट्स मेक इट सिंपल, मोर सिंपल। क्लास में मैंने डील किया है, बट आई कुडंट सी एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन, सो लेट्स लीव इट। डन है, आगे बढ़ते हैं। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में क्या है तुम्हारा, इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें दो चीजें पूछ सकता है, टाइम टेकन टू, आई मीन लिस्ट टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, और सेकंड थिंग while crossing the river shortest path taken, ठीक है। सो सपोज कर लो ये नदी है, लेट्स गो वेरी नॉर्मल वे, आई मीन इन अ वेरी इमेजिनेटिव वे। जैसे यहाँ पे रिवर है, लेट्स से रिवर इज फ्लोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, सो वाटर करंट इज इन दिस डायरेक्शन, यू आर स्टैंडिंग हियर एंड यू हैव टू रीच हियर, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ। डन है, यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे डायरेक्टली, तो यू आर क्रॉस, व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर यू आर ट्रेवलिंग द लिस्ट, सो दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आप क्या करोगे, कैसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तभी होगा ना व्हेन इफ आई एम स्विमर, आई एम हियर एंड माय होल वेलोसिटी, ओवरऑल वेलोसिटी इज डायरेक्टेड इन वाइज डायरेक्शन, इन दिस सेंस, तभी तो मेरा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, आई विल रीच देयर, राइट। इफ आई हैव कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और इफ आई हैव वेलोसिटी आल्सो इन दिस डायरेक्शन, तो मैं यहाँ ना पहुंच के कहीं इधर पहुंच जाऊंगी। डन है। सो शॉर्टेस्ट पाथ का टारगेट क्या है, योर वेलोसिटी शुड बी अलोंग द विथ डायरेक्शन, ठीक है। एंड हाउ इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल तभी है क्योंकि रिवर के पास ऑलरेडी वेलोसिटी है, रिवर विल, while you will swim like this, river will push you like this, so you need to have a velocity in this sense also, so that you can cancel the velocity of river, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमेशा वी स्टार्ट स्विमिंग नॉट इन द स्ट्रेट सेंस, बट वी मेक सर्टेन एंगल। सो यहाँ पे थीटा एंगल आप बना के चल जाओ। सपोज वी वेलोसिटी से आप चले हो, सो v cos theta will be velocity in this direction, v sin theta will be in this direction, and this v sin theta should be equal to river velocity, and then you will go forward with v cos theta, shortest path। नेक्स्ट थिंग पूछता है शॉर्टेस्ट टाइम, तो तुम खुद सोचो शॉर्टेस्ट टाइम में तुम कैसे पहुंचोगे रिवर के दूसरे किनारे पे, इफ यू आर मूविंग विद द हाईएस्ट वेलोसिटी, राइट। जब हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, देन वी
travel the distance in the shortest time, right? This is the concept. So अगर तुम यहाँ से देखो, एक काम करते हैं, सो शॉर्टेस्ट टाइम में हमें जाना है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सारी वेलोसिटी, जैसे रिवर को क्रॉस करना है, मीन्स कितने विथ को क्रॉस करना है इतना, यानी कि इन वाई डायरेक्शन यू हैव टू ट्रेवल डी डिस्टेंस, राइट? सो to cover d distance you should have a maximum velocity along this sense. So you should start swimming in this direction itself, इसी direction में तुम्हें start करना है, so that your velocity is not getting divided into other directions. Your velocity is fully dedicated towards width of river, and in that case you will cross the river in shortest time. But yes, in that case you will not reach एग्जैक्टली एट द ऑपोजिट पॉइंट, तुम थोड़े डिविएट हो जाओगे, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी तुम्हें पुश करेगी, ठीक है? दिस टाइम यू आर नॉट बैलेंसिंग दैट, दिस टाइम योर फोकस इज की डी के सेंस में हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए. सो दैट इज हाउ वी गेट द शॉर्टेस्ट टाइम. डन है? क्लियर है? सो दिस इज रिवर बोट प्रॉब्लम. लेट्स डू सम क्वेश्चंस. रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. सो जनरली पुलिस चोर का जो खेल होता है ना, उससे हमने सीखा था कि if there is one thief who is running away and there is one police who is chasing, डन है? अगर तुम्हें बताना है कि इनके बीच का डिस्टेंस इनिशियली इज 10 किलोमीटर, in how much time police will catch the thief? So simply we use the concept of relative velocity. Let's say thief is moving with velocity vt and police is moving with velocity vp, and then we write कि relative separation 10 है, time taken will be velocity of police with respect to thief. Like this we do. इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है, when you write vp minus vt ना, velocity of police with respect to thief, then thief becomes at rest, and with respect to thief, then police is moving with what velocity? vpt. That is vp minus vt. सो रिलेटिव सेंस का मतलब यही है कि अगर तुम p का वेलोसिटी t के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो तुम मान रहे हो कि t रेस्ट में है, एंड देन यू आर सीइंग विथ व्हाट वेलोसिटी पुलिस इज मूविंग टुवर्ड्स द थिफ. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. सिंपल यहाँ पे लॉजिक यही है, और सिंपल क्वेश्चन इसी से आया है. विल डू सम क्वेश्चंस. दिस इज 2024 क्वेश्चन. सो लेट्स सॉल्व इट. This is simple average velocity calculation. So I hope you people will do it. Take your time. I am launching the poll here so that you can do it. ठीक है? You can also let me know in the chat section. Okay, I got 2 answers, 4 answers. All are incorrect so far. What happened? Calculate properly. थोड़ा तो time लो यार, 30 सेकंड तो लो. Please take this session seriously. ठीक है? तुम्हें questions practice करने हैं. You have to learn things. अगर भूल गए हो तो वापस that will get into your brain. So you have to stay with the session and you have to follow the rules. Please be serious. And I feel like everyone is serious, whoever is here, because you're here by your own choice, right? You're not in school. You're not forced to join the session, right? You're joining it willingly. So that's a very good sign, actually. So you should show that thing in how you are answering to questions also. So take your time, do solve it, then let me know your answers. Yes, Prashant, Tarun, Suma, Sasi Rekha, Shivani, Simran, everyone, let me know. Punit, okay, Maya, I feel like you need to recheck. एक बार recheck करो. Maybe you are getting stuck with some calculation thing, maybe.
Okay. JNB, Yanam. Why everyone is getting this answer? Okay, काम करते हैं. Let's solve it together. Let's see. Okay, two answers I got, which is correct. That's great. Let's do it together now. ठीक है, करते हैं साथ में, so that you can see where you are getting mistaken. So what's the question given here? A particle moving in a straight line cover half the distance with a speed this. So let's say this is this thing. This is the half distance A to O and O to B. So OA and OB are equal in measurement. ठीक है? So Lingala, it's not correct actually. Let's recheck. Okay. So OA, it is getting covered with 6 meter per second. Done. The other half is covered in two equal time interval with speed 9 meter per second and 15 meter per second. So equal time in the other two half is covered in two equal time intervals. So let's say it got covered with 9 meter per second and this got covered with 15 meter per second. And this got covered, this to this got covered in T1 time. Sorry, equal time interval hai na. So this got covered in T time. Let's say this got covered in T time. Done it? The average speed of the particle. We have to see average speed. So just see here. Let's say from A to O, it went in time T1. Done it? And it got covered with a speed of what? 6 meter per second. So अगर मैं यहाँ पे लिखूं OA is equal to how much? This is 61, right? And OB is equal to how much? That is equal to this distance got covered in T time with a speed 9 meter per second. So that is 90. And this distance, let's say this is O dash B. O dash B got covered in T time itself with a speed 15 meter per second. So यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 15 T. So total OB is 90 plus 15 T. And we know that OA is equal to OB. So we can write here, this is 24 T is equal to 6 T1. So T1 is equal to how much? 4 T. Why I did this? क्योंकि हमें निकालना क्या है? Average speed. So how we calculate average speed? Average speed is equal to total distance, that is AB, by total time taken. ठीक है? So that is equal to T1 plus 2T. Now AB will be equal to how much? AB is equal to OA is 61. So यहाँ से आप 61 लिखो. Plus this is 24T divided by T1 plus 2T. So if now you solve it, T1 का वैल्यू आप क्या रख दो? 4T. So this is equal to, ये कितना हो जाएगा? 48T divided by T1 is how much? 40 plus 2T, that is 60. So answer is equal to 8. Done it? So you have to move wisely. Done it? It was said that in two equal interval of time, rest half distance is getting covered. So पहले तो ये देखो कि average speed निकालना है, total distance by time, AB by T1 plus 2T, right? So how you will relate these things? You can simply use the formula. Done it? Everyone clear with this? Is everyone able to check where they went wrong? What they did? What mistake they did? Yes. किसी को डाउट है? Okay, explain once again. ठीक है? Question क्या था? Let me remove everything from here. Question क्या है? We have certain distance given. Let's say AB distance is there. Half of the distance is getting covered with 6 meter per second. For next half, what is happening? For next half, we are dividing it into two intervals. So एक interval जो cover हुआ है, वो कितने speed में cover हुआ? 9 meter per second में cover हुआ. और दूसरा इंटरवल कितने में कवर हुआ? 15 मीटर पर सेकंड में कवर हुआ. दिस इज गिवन, राइट? एंड what else is said? Another thing given is this interval and this intervals are getting covered in equal time. So from reaching O to O dash, if we have taken T time, then from O dash to B also we have taken T time. That is given in the question. The other half is covered in two equal time interval. लिखा हुआ है ना? So next half we are covering it two equal time intervals.
and speed is different. It means uh, this distance O dash and O dash B is not equal, right? Time is equal, speed is different, so distance has to be different, right? So मैंने ऐसे लिखा, हमें निकालना क्या था, एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ ओ डैश प्लस ओ बी, मैंने ब्रेक कर दिया, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम. ठीक है, लेट्स से टोटल टाइम इज टी. ओ ए को आप कैसे लिखोगे, लेट्स से कि हमने इस इंटरवल को, ओ ए इंटरवल को T1 टाइम में कंप्लीट किया. ठीक है, सो डिस्टेंस ओ ए विल बी स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 6T1. ओ ओ डैश 9 मीटर पर सेकेंड से कवर हुआ है इन टी टाइम, सो दैट इज 90. ओ बी इज हाउ मच, दैट इज 15 इंटू टी. सो टोटल टाइम कितना हो गया, T1 + 2T. अब यहाँ पे हमारे पास ओनली प्रॉब्लम इज दैट वी नीड रिलेशन बिटवीन T1 एंड टी. ठीक है, सो दैट वी कैन डू बाय लुकिंग एट द डायग्राम. ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. सो दोनों डिस्टेंस को आप इक्वेट कर दो, यानी कि 6T1 इज इक्वल टू हाउ मच, दिस 90 + 15T, दैट इज 24T. दिस टू आर इक्वल. सो टी और T1 का रिलेशन मिल गया ना हमें, एंड देन वी गॉट द आंसर. इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? यस, चरण, somebody sent me the text. ओके माया, ठीक है, थैंक यू. चरण, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू. लेट्स मूव अहेड विथ अनदर क्वेश्चन. ठीक है, इसको भी प्यार से करना, आई मीन डू इट विथ पेशेंस, टेक टाइम, डू इट. सही से प्रैक्टिस करो. यू डोंट हैव टू लूज योर पेशेंस की जल्दी नहीं हुआ. एक्यूरेसी भी मैटर करता है ना. यू डोंट हैव टू डू ऑल दोस नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट इज कमिंग इन योर एग्जाम. मे बी 5 लेस number of questions you are doing, but then also you will get good marks, right? So accuracy also matters. एग्जाम में पहले जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, जस्ट डू इट फर्स्ट. आफ्टर दैट यू गो इनटू जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है. सो आई हैव इंक्लूडेड क्वेश्चन जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, मोस्टली. ओके, आई गॉट वन करेक्ट आंसर. आई होप यू सॉल्व्ड इट. टू करेक्ट आंसर्स, दैट इज गुड. ओके, वन आंसर आई गॉट दैट इज इनकरेक्ट. यस सरस्वती, you can unmute yourself now. Or you can text me if you are not comfortable in speaking. Okay, Sruti. Sorry, Sruti. I hate pronouncing rain not correctly. Yes, Saraswati. That's great. Yes, Puneet. थोड़ा मिस्टेक हो रहा है. मे बी इन कैलकुलेशन. थोड़ा मीन्स लिटिल मिस्टेक हैपनिंग. मे बी that is in your calculation. This is a good question. Don't worry. If good question meaning you really have to keep patience and write all those things. Okay? There is no shortcut to it actually. That's what I'm telling. Okay, total 9 of you has answered it. Okay, 4 answers are correct. That's great.
Okay, I'm ending the poll here because I have already given you 3 minutes. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू इट प्रॉपरली बिकॉज फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू आर गोइंग टू लर्न थिंग्स. डन है. लर्निंग मीन्स साइन कन्वेंशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, वन डी मोशन. So there is a body projected vertically upward with a certain speed from the top of a tower. So let's first make a tower. So यहाँ पे मैंने बनाया tower. यहाँ पे है ball. What we are doing, we are projecting it upward with certain speed. Let's say we are projecting it with a speed u. And then it is hitting the ground in time t1. So what will happen? This ball will go up, up, up. At certain point, its velocity will become 0, and then it will start coming down. So in this whole motion, how much time it is taking? T1. This is given in our question. If it is projected vertically downward from the same point with the same speed, it reaches ground in T2. Next case में क्या हो रहा है तुम्हारा? वहां पे भी टावर ऐसे है, यहाँ बॉल है, but this time we are projecting it downward with same speed u. So it will simply come down. And it is coming down in what time? T2 time. So in the third case, it is said time required to reach the ground. Third case में कितना time लगेगा? If from the tower, we are simply dropping the ball. So let's say it is taking time t. ठीक है? Simply dropping the ball means its initial speed here is 0. Unlike two previous cases where the initial speed was u. In first case, u is upward. In second case, u is downward. So, sorry, this is t. So we have to calculate t in terms of t1 and t2. Then let's say the height of tower is h. Let's say height of tower is h. So if I calculate t in terms of h, can I do it? यहाँ से देखो ध्यान से, अगर मैं t को निकालूं तो कितना होगा? Which equation I should use? Second equation of motion use कर लो, क्योंकि time is there, height is there. So that is what s equal to s minus s नॉट ही चलो लिखती हूं मैं, is equal to ut plus half at square. एक काम करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेती हूँ और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या मान लेती हूँ? नेगेटिव. So if you see here, at t time, what is happening? It is at the ground. So at t time, s equal to what? 0. So this is 0. Initially, s naught value is how much? H. It is initially at h height in the upward sense. So plus h, minus is already there. So h equal to u is 0. So that is 0. Half acceleration due to gravity in the downward direction. So negative sign, क्योंकि downward को मैंने negative लिया है. This. So T is equal to 2h by g. This is the answer, right? But we don't know h. We don't have information of this one. How to go around this now? यही हमारा task है. So we can do one thing here. एक काम करो, इसके same equation जो यहाँ पे हमने third case के लिए लिखा ना, same equation first के लिए आप लिख डालो. So if you're going to write that, again s will become 0 because in all three cases ball is finally hitting the ground. So s is 0 in all the cases. So here also minus h. Initial velocity is in the upward direction, u t1 minus half g t1 का square. सेकेंड केस के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो माइनस एच एंड इनिशियल वेलोसिटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो माइनस लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ, माइनस यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू का स्क्वायर. डू वन थिंग, वी कैन फर्स्ट सब्सट्रैक्ट दिस, क्योंकि अगर आप सब्सट्रैक्ट नहीं करोगे तो I mean, if you're going to add these two things, can we get the answer? Let's check once. Add करके देखते हैं. So add कर अगर हम देखें यहाँ पे तो कितना आएगा बताओ? -2h आया है ना? And this is equal to how much? U t1 minus t2 डन है, माइनस हाफ g, दोनों ही साइड माइनस है तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर हो जा रहा है. समझ रहे हो? सो माइनस में इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि अगर यहाँ से t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर आएगा ना तो t1 माइनस आई मीन इट विल बी मोर इजियर टू कैलकुलेट, क्योंकि अगर t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं t1 माइनस t2 t1 प्लस t2. कुछ कैंसिल होगा, थिंग्स विल बी मोर सिंपलर. सो यहाँ पे देखो ऐड कर रही हूँ, चीजें जा नहीं रही सही से. सो ये सारे कैलकुलेशन आइडियाज होने चाहिए दिमाग में, एंड दैट ओनली कम्स विद द प्रैक्टिस.
तो चलो सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये हो गया 0। और ये कितना होगा अगर मैंने इसको प्लस कर दिया, इसको कर दिया माइनस, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u t1 + t2। और ये तो प्लस हुआ था, सो दिस इज +12 g t2² - t1²। सो यहाँ पे आप लिखो t2 - t1 और t2 + t1। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो if you see here, हाफ g t2 - t1, थोड़ा कैलकुलेशन है, पेशेंस रखो, कर लो। सो दिस इज -u। इसको एक काम कर लो, t1 - t2 कर दो। सो t1 - t2 g/2 इज इक्वल टू u। ठीक है, डन है। सो यहाँ से मुझे u का वैल्यू मिल गया। अब कोई भी क्वेश्चन में u का वैल्यू आप पुट कर दो और h का वैल्यू आप निकाल लो। तो चलो पहले ही क्वेश्चन में मैं पुट करती हूँ, -h इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना था, t1 - t2 g/2। t1 - t2 g/2। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन में फंस रहे हो तो लीव कर देना, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम किल नहीं करना हमें। हमें क्या करना है, हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो दिस इज u, t1 था ना यहाँ पे, यस। u का वैल्यू रखा इंटू t1। सो दिस इज दिस। अब यहाँ से देखो इजिली हमें मिल जाएगा, -h इक्वल टू, यहाँ से t1 का स्क्वायर आप लिखोगे, t1² -t1 t2 -t1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। सो इफ यू लुक हियर केयरफुली, h का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, t1 t2/2 इंटू जी, राइट। दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग। पुट इट देयर नाउ। टाइम t कितना था, √2h/g। अगर आप इसको पुट करोगे, 2 इंटू h कितना है, t1 t2 g/2। डन है। सो दिस और यहाँ पे जी था पहले से, जी जी भी कैंसिल हुआ, आंसर कितना हुआ, √t1 t2। सो करेक्ट आंसर विल बी दिस वन। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया सो दैट तुम लोग साइन कन्वेंशन सही से समझ पाओ, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लेना है। इवन इफ द इन द एग्जामिनेशन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, अगर ज्यादा दिमाग लग रहा है, स्टक हो रहे हो, लिव इट। क्योंकि एक क्वेश्चन के चक्कर में तुम्हें 10 मिनट नहीं गंवाना है, ठीक है। So that is important. Wise selection in the examination hall is also very much important. अब ये सारे, ये भी प्रीवियस ईयर आया है, ये क्वेश्चन देखो, पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर। सो एवरीवन डू इट फास्ट। चलो करो। फॉर्मूला याद है सबको, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या था, u + a/2 2n - 1। दिस वाज द फॉर्मूला, ठीक है, यही है फॉर्मूला। 1 आंसर आई गॉट बट दैट इज नॉट करेक्ट। तुमने ना कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, सम 2 का इशू हुआ है, सही से देखो। यस, now it's correct. Two correct answers I got. Okay. Many of you should try. Yes, Saraswati, that's correct. No, that's not correct. तुमने हाफ को कहीं मिस किया है। See it carefully. Simply put the formula. So distance covered in nth second कितना दिया हुआ है, 102.5, and this is equal to how much? Sorry.
यस, यस सरस्वती, नाउ इट्स करेक्ट। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड को आप क्या लिखने वाले हो, दिस इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन, सो दिस इज टू एन माइनस वन। सेकेंड में आप क्या लिखोगे, 115.0 एंड दिस इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, एन का वैल्यू क्या है, एन प्लस टू, सो टू एन माइनस वन निकाल लो सेकेंड केस के लिए, टू एन का वैल्यू क्या है, एन प्लस वन नहीं टू है, ठीक है, this minus 1, so if you're going to put it 2n plus 4 minus 1, so that is 2n plus 3, so यहाँ क्या आने वाला है, 2n plus 3। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को माइनस कर लो, ठीक है, इसको इससे माइनस कर दो, तो कितना आएगा ये 12.5, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, a by 2, 2n plus 3 minus 2n minus 1, so that will become 4, ठीक है, so what answer you are going to get, yes Punit, very good, correct, so this is 2, a is equal to 6.25, so correct answer will be a, very good, just putting the formula getting the answer, so formula याद रखना भी बहुत जरूरी है। अब इसको देखो, गैलीलियो लॉ ऑफ थिंग से आया था, ये आया है 2 साल पहले, ठीक है, नीट में ही आया है, सो नाउ यू कैन टिक मार्क द आंसर, है ना, सभी लोग बताओ कितना आंसर होगा इसका, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट राइट, क्या आंसर होगा, okay, so many wrong answers, why, maximum is correct but 4 wrong answers I got, yes Maya, that's correct, so in first second, second third second fourth second मैंने बोला था वो odd number का रेशियो होगा, so 1:3:5:7, ठीक है, अगर यहाँ से देखो वेरिएशन ये हो सकता है कि अगर तुमसे बोलता है कि टावर का हाइट सपोज कर लो h है, डन है, तो तुमसे पूछता है कि थर्ड सेकंड में कितना चला, उसका एक्चुअल वैल्यू बताओ, सो रेशियो यू ऑलरेडी नो, डन है, सो लेट्स से इट इज कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर इन सम सेकंड्स, so ratio we are having right, and let's say it is coming down in 4 सेकंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 सेकंड में वो अंदर ऊपर से नीचे गिर गया, and it is asked that how much distance it covered in third second. So since it is coming down in fourth second, we will have 4 interval. And that is why only 4 terms you will include in the ratio 1:3:5:7. Done it? Total distance is h. So let's say first second में x चला, तो second second में कितना चलेगा 3x, third में 5x, fourth में 7x. So total distance ये हो जाएगा and this will be equal to how much h. So from here you can calculate x, right? यहाँ से हमें x मिल जाएगा. And if you know x, you can calculate x, 3x, 5x, 7x. ठीक है? So इस तरह के questions भी आ सकते हैं. Always remember this thing, how to do these things. Ratio को deal करना आता होगा, है ना? If you know the ratio, if you know the total distance, एंड यू नो कि 4 सेकंड में आया है 4 इंटरवल लेना है, 5 सेकंड में आएगा 5 इंटरवल लोगे, 6 सेकंड है 6 इंटरवल लोगे, अकॉर्डिंगली यू विल राइट, ठीक है, नो इश्यू। नाउ डू दिस रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिस ऑल्सो केम 2 years बैक, you just need to put in the formula and apply the sign convention, nothing else. I hope you all are doing it. There's so many wrong answers I got. 3 correct out of 5 answers given. Okay. So हमें निकालना क्या है यहाँ पे,
आई कैन मार्क, कुछ लोग चैट सेक्शन में ही आंसर कर रहे हैं, सरस्वती, माया, पुनित, everyone else would also respond. Saraswati, yes, you have tried. I feel like you got wrong in, I mean, तुमने शायद ऑपोजिट आंसर आंसर किया है. लेट्स सी. So train A is moving along two parallel tracks towards north with a speed of this. So one is moving towards north with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर. उसको अगर मीटर पर सेकंड में करोगे तो कितना हो जाएगा? 5/18 से ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो. So that is 20 मीटर पर सेकंड. This is status of A. And what is the status of B? B is moving towards south. So it is going down with a speed of 108 kilometer per hour. So इसको अगर convert करोगे मीटर पर सेकंड में, you will get, this is 6 times. So this is 30 meter per second. ठीक है? And this is status of B. Let's say this is x-axis. By convention, normal convention, this has to be origin, right? Upward direction is taken as positive by convention. Nothing is given in the question, right? About direction. So you have to use the normal convention. और यहाँ पे downward को क्या ले लो? Negative ले लो. So first we have to calculate velocity of train B with respect to A. So velocity of B with respect to A. क्या लिखोगे आप? VV minus VA. ऐसे लिखोगे, है ना? और VB किधर है? अगर ध्यान से देखो तो दैट इज इन माइनस जे कैप डायरेक्शन. तो इसको लिखोगे -30 जे कैप माइनस VA इज अलोंग प्लस जे कैप डायरेक्शन. So that is 20 j cap. So this is equal to -50 j cap. And minus sign itself is indicating it is in the downward sense. So -50. फर्स्ट आंसर तो -50 होगा. यानी कि कौन कौन करेक्ट हो सकता है? ए और बी दोनों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है. ये दोनों तो रॉन्ग हो गया, है ना? Now coming back to second, velocity of ground with respect to B. So you have to calculate velocity of ground with B. Ground का velocity क्या होता है? 0. Velocity of B क्या है? Velocity of B is in downward sense. So that is -30 j cap. So this will become how much? Plus, so 30 j cap. यानी कि -50 and 30. And this is B. So correct answer will be what? It will be B. I hope sign convention things are clear. डन है? काफी प्रॉपर. जब भी 1D मोशन तुम लोग देखो तो साइन को प्रॉपरली लेना है. नंदिता, या आई कैन एक्सप्लेन, नो वरीज. सो मैंने ये बोला यहाँ पे तुम्हें निकालना क्या है? या सरस्वती. सो निकालना हमें ये था एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए जैसे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो तुम क्या करोगे? वी माइनस वी ए करोगे. डन है? सो वी ए निकालना है, क्या करना है? वी माइनस वी ए. ये तो प्लेन फॉर्मूला पुटिंग हुआ. उससे पहले मैंने ये किया कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए नॉर्थ की तरफ जा रहा है, बी साउथ की तरफ जा रहा है. नॉर्थ मतलब अप, साउथ मतलब डाउन. कन्वेंशन अगर तुम लोग एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हो तो इस डायरेक्शन को बाई कन्वेंशन पॉजिटिव मानते, इसको नेगेटिव मानते, इसको पॉजिटिव मानते, इसको नेगेटिव मानते. सो आई टुक द कन्वेंशन क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है. सो ए का वेलोसिटी इज +20 आई कैप, सॉरी जे कैप, है ना? ए का. और बी का वेलोसिटी कितना है? 30 माइनस जे कैप, यानी कि -30 जे कैप. माइनस जे कैप के डायरेक्शन में है, वेक्टर सेंस में मैंने लिखा. वी ए को क्या लिखोगे? 20 जे कैप. सो कितना हो जाएगा? -50 जे कैप. यानी कि साउथ डायरेक्शन में, साउथ को नेगेटिव लिया इसलिए आंसर -50 है. ग्राउंड के लिए अगर आप निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू द बी. सो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, कुछ नहीं, रेस्ट में है ना ग्राउंड. बी की वेलोसिटी कितनी है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि 30 तो है लेकिन किस डायरेक्शन में? माइनस जे कैप. सो -30 जे कैप. सो ओवरऑल इफ यू आर सॉल्विंग इट इज गिविंग यू 30 जे कैप. सो दिस इज द आंसर. Nandita, is it clear? If yes, then okay, thank you. So thank you so much. Tomorrow in the class, 3 questions are left. उसके बाद हम second portion, different portion को discuss करेंगे. Maybe work power energy or something. But 2 questions I will take from the graph portion of kinematics, one from riverboat problem. ठीक है? उसको करने के बाद we will move on to the next section. Done? I hope you all enjoyed the session, and I really mean it. If you need more
things out of the session, you can contact me, you can let the team know also. ठीक है, I will wait सबके लिए कल के क्लास में भी. So don't miss on classes, don't miss on test. So let's meet tomorrow. Bye everyone, take care of yourself, keep preparing and keep yourself healthy. Bye everyone, take care.